Hello everyone. So today I'm here to talk about the much awaited snake plant. Let's get started. Firstly, I would be discussing the care, propagation, problems, the plant, if kept indoors or outdoors, what is the procedure to take care of it, the rates available, they are available with different nurseries online, few stories, the varieties that I own, the fertilization and the toxicity of the plant. So सबसे पहले if I talk about care, it is a wonderful plant for beginners and it's a very hardy plant. So much so that इसके लिए एक साइंटिस्ट ने जोकिंगली ये भी कहा है कि these plants can be kept in a closet. Don't do that, obviously it's just said for as in a joke, because they can really survive in lowest of the lights to the brightest and darkest, like to the brightest of the sun, not the darkest of sun, to the brightest of the sun. And care में they thrive on neglect. They hardly need any amount of care, and they are stemless basically. So you can see they're only leaves in the plant, and they uh, divide out through, they propagate or give birth through their rhizomes, जो उनके नीचे के जो बड़े बड़े मोटे मोटे ट्यूब्स होती हैं वहाँ से बहुत जल्दी जल्दी, स्पेशली इफ़ यू कीप देम इन स्मॉलर पॉट्स, दे टेंड टू मतलब वेरी, what this rate at which they give out pups in smaller pots is amazing. And it removes formaldehyde, benzene, toluene, xylene, or cancer causing elements from your indoor air which gets polluted. So ये सारे elements जितने भी मैंने अभी बताया, formaldehyde, benzene, toluene, xylene, these are found in all your varnishes, in your furniture paints, in your paints, and they are generally not very good if you breathe them. So these plants are a must have, because these plants remove these toxins from your air and make your air healthier to breathe in. Next point is, it was also recommended by NASA because ये रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड absorb करता है and oxygen देता है. So it's one of the rare plants which does this job. And also it is native to Asia and Africa. मैंने actually सब कुछ jot down किया है, तो मैं बीच बीच में देख रही हूँ. I cannot ratify so much. All my research and all that I have had personally experienced with this plant is what I'm sharing with you. So I've literally seen certain documentaries where people are going in the wild in Africa and Asia, and literally maybe ये cylindrica variety और बड़ी बड़ी वाली, वो बिल्कुल wild में like grass is growing and looks so very tempting कि अगर काश हम होते तो हम तो उखाड़ उखाड़ कर ले आते. क्योंकि पर्सनली मेरे जितने ज़्यादा आधे से ज़्यादा स्नेक प्लांट्स आई ओन लाइक दैट ओनली. Now this also combats the sick building syndrome. Sick building syndrome मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि certainly sometimes the very phenomena of staying inside a building leads to a lot of complications for certain people. You can also Google it and see it in detail, but it combats that particular syndrome. It is that good a plant. And इसके कुछ common नाम है, St. George sword, as you can see how sword like this the leaves are, and Viper's bowstrip hemp, Viper's bowstring hemp, and snake plant, mother-in-law's tongue, and Sansevieria बोलते हैं, but the genus has changed, if I'm pronouncing it correct. It is no more Sansevieria, and it belongs to the family of Dracaena because of its molecular structure in the leaf. Basically, that is what I could understand. There's not a lot of study on it, but that is what I can understand from reading the latest documentary, the latest research on it. Okay, so even though you can keep them in very dim lit rooms, snake plants prefer bright and direct light. You can also keep them in the sun, but if you keep them in the sun, they will start burning off from the tips. टिप से थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाएंगे बहुत तेज़ धूप में रखने से. वैसे तो बहुत हार्डी हैं, जनरली होगा नहीं, बट इट इज़ बेस्ट टू कीप देम इन ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट. मॉर्निंग और इवनिंग सन डज वेरी वेल फॉर देम. ऑल्सो इफ़ यू कीपिंग देम इन वे टू indirect light, matlab way too dim lit spaces, you will
basically see that the leaves start to curl up like this. अगर आपकी लीव्स ऐसे कर्ल अप हो रही हैं, मतलब कि आपके पेड़ को लाइट अच्छी नहीं मिल रही है, एंड ये तो शायद देखिए बहुत बड़ा सा हो रहा है, एंड क्योंकि ये काफ़ी ऊपर की तरफ आके निकला है इसलिए इट इज़ stooping down. Otherwise, if your leaves are curling like this, then there's a problem. It can also be a fungus problem. It can be basically, but it is generally it is very hardy and very prone to any pest or any insecticide, मतलब any pest attacks. बट मिली बग्स एंड थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती. अदरवाइज जो मैंने आपको बताया कि लीफ अगर ऐसे कर्ल हो रही है एकदम यूँ, दैट मीन्स दैट योर प्लांट इज़ नॉट गेटिंग इनफ लाइट. So you need to keep a check on that. Now how to propagate it? Division is the easiest. निकाला, उनको अलग किया. Otherwise you can also water propagate or root propagate. Just take a cutting. यहाँ से कटिंग मारिए. बहुत तरीके की वीडियोज़ होंगी यूट्यूब पे आपको मिलेंगी. I propagated this in water and it was kept in soil. तो फॉर स्नेक प्लांट आई विल से दिस कि जब आपका स्नेक प्लांट अच्छी खासी रूट्स लंबी लंबी निकाले तभी आप उसको सॉइल में करिए. अदरवाइज यू विल एंड अप किलिंग द प्लांट बिकॉज rot is one thing it faces very easily. It is very much prone to getting rot rather than anything else. So that, now rates can vary anywhere from 50 to 100, 150. I've been to nurseries in Udaipur where they are selling this big plant for 1,500 rupees. And ever since the indoor plant aesthetically has come up with magazines, with people, with the lockdown, the rates of indoor plants have just increased. So उस सारे फैंटम में मत फंसिए. एक पेड़ भी लेकर आएंगे, विद टाइम वो बढ़ता जाएगा. एंड बेसिकली यही कहूँगी कि आप इसको वाइल्ड में ढूंढने की कोशिश करिए. बहुत ईजिली यू विल गेट इट. माई दिस द वन विद द येलो बॉर्डर, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, आई विल लेट यू नो दैट ऑल्सो. तो थोड़ा टिपिकल सा नाम है. ये तो हम एक जगह से उखाड़ कर लिया है. बाकी एक ये वाले जो स्नेक प्लांट वैरायटी है मेरे पास, the normal one, this one, I and my husband were going to Dehradun and we stopped at a place to have some ganne ka juice. Now what happened was, ganne ke juice ke it was in like road pe and pura us side jungle tha. I just noticed these pretty sansevieras growing there. I said, my god Danny, we need to take them. And I told my husband, because ye bahut hi tightly it was fitted into the ground, he had literally to pick up a buck, properly, just pull it, and he had to pull it, he had to do that. So he pulled it and we got it, and ever since then I've been using these snake plants as as a decor piece in my house, and they make wonderful aesthetically appealing objects. Also there's no tension of regularly misting them as in palms and all those things. Palms भी बहुत अच्छे लगते हैं, but palms को you need to keep checking for the leaves if they are not turning brown, the tips are not turning brown and all those things. This plant really overcomes that problem. मेरा बेटा उठ गया बस. तो रेट्स देखिए, नर्सरीज, डिफरेंट नर्सरीज़ में डिफरेंट रेट्स मिलेंगे. ऑनलाइन महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता आपको मिल सकता है. वट एवर सूट्स यू, विच एवर रिव्यूज़ यू लाइक, गो एड एंड बाय देम. दीज ये वाले जो थे, ये वाले मैंने अपनी लोकल नर्सरी से लिए थे. एक सहारनपुर से, एक इलाहाबाद से उखाड़ा था. ये लोकल नर्सरी से 80 रुपीज़ में उसने मुझे अच्छे वाले ये दे दिए. और बाकी एक पर्टिकुलर ये लंबा वाला जो आप देख रहे हैं, ये भी थोड़ा अलग सा है. ये सिलेंडर का नहीं है, बट ये अलग सा है. ये मैं अपनी मम्मी के घर से लाई हूँ. ये वाला जो है स्टारफिश सैंसेवेरिया या बॉन्सिल सैंसेवेरिया, ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था 365 का अप्रॉक्सीमेटली. एंड आप देख सकते हैं इसने बहुत जल्दी पप भी निकाल दिया. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद इट. It's doing very good. Okay, so it's mostly prone to root rot, some mealybugs, spider mites. That's very rare. They also flower, but that's also again very rare.
and the varieties that I own, now I'll be reading it out to you. Cylindrica Dwarf Bonsal, फिर ये वाला जो है इसे कहते हैं सैंजवेरिया, इनफैक्ट ड्रेसिना ट्रिफैसेटिया ट्रिफैसियाटा फ्यूचरा रोबस्टा लॉरेंटी. No, this is not Laurenti. This one is the Silver Queen. Okay, इसे Silver Queen कहते हैं, and this is the Laurenti. Or maybe this is the Laurenti version and this is the Silver Queen, because this is quite silvery and dark green in appearance. So yeah, bright light is what it needs. अरेंजमेंट्स अगर घर पे करने हैं तो देखिए, ऐसे तो आप पूरा एक सेटअप लगा सकते हैं सैंजवेरियाज का ही ऑन अ टेबल, बट दे विल डू एक्सट्रीमली वेल विथ क्रोटन्स, कैलेथियाज, जेड, सक्यूलेंट्स, most of the succulents, because the light conditions are somewhat the same. But if like you're going for a decor piece sort of, if you see in this table, यहाँ पे सारे A to Z, यहाँ पर नीचे की तरफ सारे ज़्यादा जो है मैंने सैंजवेरियाज ड्रेसिनाज लगाए, एंड यहाँ पर क्रोटन है एक, बीच में एक पाम है. अदरवाइज यू कैन डू रियली ब्यूटिफुल सेटअप्स. अगर मुझे कुछ मिलेगा तो आई विल श्योरली पुट इट इन द वीडियो, बट अपने आप में तो यू कैन जस्ट इन अ टेबल लाइक दिस पर्टिकुलर पीस, इसको तो इन अ टेबल ही हम रखते हैं एंड लाइट्स लगा देते हैं. ये अपने आप में ही इट गिव्स सच अ नाइस अपीलिंग लुक एंड इट लुक्स रियली रियली गुड लाइक दैट. So they add height to a place and can be used for division also. So you can use them as show pieces. They are good for people with 9 to 5 jobs because you can easily ignore them. And also for those who travel a lot. So thumbs up if you want to start a gardening and you're somebody who travels a lot, go ahead and buy these plants. If you're forgetful of watering or you tend to neglect plants, you tend to lose interest, this is the plant for you. एक फर्टिलाइज़र की भी बात कर लेती हूँ. ये चावल का पानी है. दे आर नॉट हैवी फीडर्स, तो बहुत कुछ देने की ज़रूरत नहीं है. ये चावल का पानी इज़ मोर देन इनफ फॉर देम. एंड यू नो, थोड़ा थोड़ा सा आप दे दें. डाइल्यूटेड चावल का पानी है, बहुत वो नहीं है, तो आप ऐसे दे सकते हैं इनको सबको थोड़ा थोड़ा, वो भी महीने में 2 महीने में एक बार. अब तो जैसे लाइक द सीज़न हैज़ कम, दे विल गो डोर्मेंट. Basically they do a lot of growth during the summer season, the rainy season, the springs, and like March से October तक का time they will do. उसके बाद फिर they go dormant, and I will not suggest them keeping out in chilly environment, like बिल्कुल chilly evenings या nights में मत रहने दीजिए. It will affect the plant. It is not that suited, even though it grows in the deserts, but let it be at a good room temperature and don't just let them, you know, be exploited in any way. Brown जहाँ tips पड़ने लग जाए, no, there's, you know, something going wrong. Also guys, 11th को International Girl Child Day पे I have something really interesting coming up, so I will see you all that very day as well. And अगर आपने मेरा गार्डन टूर नहीं देखा तो आप गार्डन टूर देखिएगा. मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था. Urbanscape Bangalore is another channel on YouTube. You can go and subscribe to them as well. And sir also makes amazing content. So I participated in a garden tour sort of a thing, and a lot of other people did. उनमें से आधे ज़्यादा YouTubers ही हैं. And he sent me this wormy compost from Trust Basket. इसका रेट यहाँ पे 899 लिखा है, बट ऑन Amazon it is somewhere around 200 to 300. Personally, I don't invest in vermicompost, coco peat, any sort of soil, cactus soil, ye soil, wo soil. I don't invest on that, but whenever I use this product, I will surely put a review. That would take time. And thank you so much USB for sending such a lovely gift. It means that like it means a lot when somebody appreciates you and sends a little, you know, token of love. See you all very soon. Bye bye. If you've liked the video, seen it till here, do like, share, subscribe with your friends, and don't kill these hardy plants.